hello, 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 hello. Let's get started for 1 hour 15 minutes maybe. Then we will try to sleep. What were we watching last day? Doc. Do we have it in the doc? Blog doc. I don't think we have it there in the doc. So, जाएगा। अगर प्रोग्राम के अंदर कंडीशन लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉल्स है तो प्रोग्राम के जिस पार्ट के लिए वो कंडीशन फॉल्स है वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस चीज को कहा जाता है कंडीशन ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कंडीशन ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है जो एक प्रोग्रामर लिखता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस होता है जिसके मदद से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखा जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइथन होता है, सॉलिडिटी होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिडिटी का इस्तेमाल करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखा जाता है। अब इन सारी की सारी चीज़ों के अलावा तुम ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ब्लॉकचेन के अंदर तुम्हें प्रोग्रामिंग करना है तो ऐसा करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब तुम लोग ये कहोगे कि ठीक है बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता कहाँ पे है? देखो,
जैसे कि तुम सब लोग को पता होगा कि ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, राइट। तो इन ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ तक जो भी चीज़ें हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में समझी है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक और सरफेस लेवल की इन्फॉर्मेशन है। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा और उस एग्जाम्पल की मदद से तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर और ज़्यादा डेप्थ में जा पाओगे और फिर आगे हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि लक्ष्मी चीट फंड नाम का एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट है। अब क्राउड फंडिंग वेबसाइट क्या होता है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, या तुम ये खुद ब खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये है, और एंड्रयू टेट नाम का एक ऐसा इंसान है जो अपनी टीम के साथ एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एंड्रयू के पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं होते। अब इसीलिए एंड्रयू ना लक्ष्मी चीट फंड को कॉन्टैक्ट करता है और कॉन्टैक्ट करके वो अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो अभी लक्ष्मी चीट फंड क्योंकि एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट होती है इसीलिए इसको कुछ ऐसे लोग पता होते हैं जो पैसे डोनेट कर सकते हैं किसी बिजनेस को जो चालू होने वाला है। तो ये जो वेबसाइट है वो इन लोगों को कांटेक्ट करती है और इनसे कुछ पैसे लेती है अपने पास। अब यहाँ पे लक्ष्मी चीट फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लक्ष्मी चीट फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एंड्रयू को बिजनेस को चालू करने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे उसको देना, और जैसे जैसे एंड्रयू और उसकी टीम अपने बिजनेस में आगे जाती जाएगी और सर्टन माइलस्टोन्स पार करती जाएगी वैसे वैसे एंड्रयू को उन टाइम पे उतने उतने पैसे प्रोवाइड करना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि अगर सपोज फ्यूचर में एंड्रयू ये डिसाइड करता है कि भाई मुझे अपना बिजनेस बंद करना है, मुझे नहीं करना अपना बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद कर देना है, अगर एंड्रयू ये डिसाइड करता है तो जितने भी बचे कुछ पैसे हैं वो सारे के सारे बचे कुछ पैसे इन लोगों को अपने अपने वापस दे देना, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी यहाँ पे अगर तुमने ऊपर ऊपर से देखा तो दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि एंड्रयू और ये जो लोग हैं ये लक्ष्मी चीट फंड के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। एंड्रयू ये चाहता है कि सही समय पे उसको उसके पैसे मिल जाए और बिजनेस वाले चाहते हैं कि उनका जो पैसा है वो सही हाथ में जाए। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए या इन सब कामों को करने के लिए, जो भी काम मैंने अभी तुम लोग को बताया, इन कामों को करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए जो लक्ष्मी चीट फंड है ये कुछ कमीशन लेता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर सपोज ये लोग एंड्रयू को अगर 100 करोड़ रुपए देने वाले हैं तो 1% कमीशन लक्ष्मी चीट फंड खाएगा। 1 करोड़ लक्ष्मी चीट फंड को मिलेंगे, वो 1 करोड़ लेगा ये सब काम करने के लिए, राइट। तो बेसिकली देयर इज अ मिडिल मैन, ये सबसे पहला प्रॉब्लम है। और दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लक्ष्मी चीट फंड कोई फ्रॉड या फिर कोई हेराफेरी भी कर सकता है, राइट। इसीलिए हमारे पिक्चर में आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एज अ हीरो, राइट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस चीज को बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली रिप्लेस कर सकता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब वो कैसे, मैं तुम लोग को बताता हूं। अब एकदम ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, एक तरफ एंड्रयू और उसकी टीम होगी और दूसरी तरफ पैसा देने वाले लोग होंगे, राइट। तो अभी क्या होगा, अभी इन दोनों पार्टीज को कंसिडर करके एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा या एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम किया जाएगा। लिखा जाएगा मतलब बेसिकली विद हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस कॉन्ट्रैक्ट को लिखा जाता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉपी है, ये कॉपी जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व है उन सारे के सारे मेंबर्स के पास एक एक कॉपी होती है उस कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब अगर सपोज कॉन्ट्रैक्ट बना है तो कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉपी इसके पास होगी वही कॉपी इसके पास होगी, 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 ऐसे। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले बोला था कि ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है और उन ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक के अंदर या एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। और ये तुम लोग को बहुत पहले से पता हुआ होगा या ये मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूं कि ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग होते हैं या जितने भी नोड्स होता है, हर एक मेंबर के पास एक एक ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। तो अगर हर एक मेंबर के पास एक एक ब्लॉकचेन की कॉपी होगी तो ऑब्वियसली हर एक मेंबर के पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की भी एक एक कॉपी होगी ना, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर ही तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। तो इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी या इस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक कॉपी हर एक मेंबर के पास होती है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि फ्रॉड नहीं हो सकता या फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बंदा फ्रॉड करना चाहता है और इसलिए वो क्या करता है, वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चेंजेस करता है, ठीक है। तो अभी अगर सपोज उसने चेंजेस कर लिए तो इसका ये जो कॉपी है, दिस कॉपी वुड बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर कॉपीज, राइट। और इसीलिए इस बंदे को पकड़ना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, इसीलिए फ्रॉड के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम है। अब यहाँ पे तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है, या बेसिकली तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे और एक अच्छी जो चीज होती है वो ये है कि चीजें ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैसा लिखा जाता है। इसीलिए मतलब एंड्रयू जब अपना बिजनेस चालू करेगा तब बिजनेस चालू करने के लिए जितना भी अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया है उतना अमाउंट उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है। बिजनेस चालू करने के बाद जब जब वो एक पर्टिकुलर माइलस्टोन कंप्लीट करता जाता है तब तब उसको जितने भी पैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे गए हैं, क्योंकि कि इस माइलस्टोन पे इसको इतने पैसे मिलने चाहिए, इस माइलस्टोन पे उसको इतने पैसे मिलने चाहिए, तो तब तब उन माइलस्टोन्स पे उसको उतना उतना पैसा ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया है, राइट। और अगर एंड्रयू ने ये डिसाइड किया कुछ समय के बाद भाई मुझे बिजनेस करना ही नहीं है, मैं मेरा बिजनेस पूरा का पूरा बंद करना चाहता हूं, तो इस सिचुएशन में जितने भी पैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे गए हैं उतने पैसे इन लोगों को अपने अपने वापस मिल जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया है। ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया है, राइट। तो बेसिकली है। और अभी यहाँ पे और एक फायदा क्या है? और एक फायदा ये है कि लक्ष्मी चीट फंड के केस में जैसे ये एक मिडिल मैन था जो कि पैसा खा रहा था, जो कि कमीशन खा रहा था, यहाँ पे कोई मिडिल मैन है ही नहीं पैसा खाने वाला, या यहाँ पे पैसे खाने के लिए कोई नहीं है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे पैसे कम खर्च होंगे, या बेसिकली लाइक मिडिल मैन ही नहीं है तो वो जो कमीशन है वो बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मिडिल मैन ही नहीं है, ठीक है। तो इतने सारे फायदे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के, और भी एक्चुअली बहुत सारे फायदे हैं। और यहाँ पे बस 2 नुकसान नहीं थे इसके, और भी बहुत सारे नुकसान है, बट जो भी फायदा और नुकसान मैंने बोले थे वो मेजर फायदा और नुकसान थे, ठीक है। तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और ज्यादा डिटेल में अभ्यास करेंगे। अब हम ये समझते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स क्या होता है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी प्रकार के मिडिल मैन की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा था कि लक्ष्मी चिट फंड वाज एक्टिंग एज अ मिडिल मैन, बट यहाँ पे मिडिल मैन की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ये पहला बेनिफिट है। जो हमारा दूसरा बेनिफिट है वो पहले वाले बेनिफिट से ही रिलेटेड है, और वो ये है कि अगर मिडिल मैन नहीं होगा तो कोई कमीशन लेने वाला नहीं होगा,
ठीक है, यहाँ पे लक्ष्मी चिट फंड कमीशन लेता था अपने काम को करने के बदले में, बट क्योंकि यहाँ पे कोई मिडल मैन ही नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई कमीशन देने वाला ही नहीं होगा और इसलिए खर्चा बहुत ज्यादा बचता है, खर्चा ज्यादा नहीं होता। ओके ये दूसरा बेनिफिट है। और तीसरा बेनिफिट ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ना चीजें ज्यादा फास्ट होती है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे हमने पहले देखा था कि चीजें ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन बेनिफिट्स है। अब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स का अभ्यास करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूं। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाया है। अगर आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो ऐसा करने के लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से आंसर्स लिखने पड़ते हैं और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर मिलेगा जिसको पढ़ के आप एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इजीली पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये है कि एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया और ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर हो गया और उसका कॉपी लाइक सबको मिल गया तो उसके बाद उस कॉपी को कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर फिर भी किसी ने चेंज करने की कोशिश की तो वो पकड़ा जाएगा। और ऐसा क्यों होता है मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था। अब अगला कैरेक्टरिस्टिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि एक तो मिडलमैन की जरूरत नहीं होती है, ये तो हमें सबसे पहले पता है। दूसरी चीज ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ होता है कोड के द्वारा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि एंड्रयू टेट को अगर बिजनेस बंद कर देना है तो जो बचे हुए पैसे हैं वो इन लोगों को वापस मिलने चाहिए, तो वो बचे हुए पैसे इन लोगों को वापस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हर एक मेंबर के पास होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है। अब हम ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन ही ऐसा क्यों सुटेबल प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया गया है। सबसे पहला रीजन है कि ब्लॉकचेन के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब मैंने तुम लोग को पहले बता दिया कि क्या होता है। मतलब अगर सपोज कोई चीज ब्लॉक के अंदर लेजर के अंदर स्टोर हो गई है, इन दिस केस फॉर एग्जांपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। इसका मतलब इम्यूटेबल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ब्लॉकचेन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। और दूसरा रीजन ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ओपन होती है। मतलब जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हर एक नोड के पास होती है, तो हर एक नोड के पास होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक नोड उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है। द इंफॉर्मेशन इज ओपन एंड दिस अ वेरी गुड थिंग। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी एंड्रयू की टीम में से एक बंदा बोलता है कि आज हमारा ये माइलस्टोन हुआ और इसलिए हमें इतने पैसे मिलने चाहिए। अगर उसने ये बोला, ठीक है, बट अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा ही नहीं है तो, और बाकी के लोगों को कैसे पता चलेगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज लिखी नहीं है उनके पास? क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, वो लोग उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं जिसके अंदर लिखा है कि अगर ये माइलस्टोन कंप्लीट हुआ तो उसको इतने पैसे मिलने चाहिए बिजनेस वालों को। ठीक है, तो इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सबके लिए ओपन होती है, सबके लिए अवेलेबल होती है। एंड देयर इज अ वेरी प्लस वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि क्यों ब्लॉकचेन इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स सो मच। इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आएगा अगर प्रोग्राम के अंदर कंडीशन लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉल्स है तो प्रोग्राम के जिस पार्ट के लिए वो कंडीशन फॉल्स है वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस चीज को कहा जाता है कंडीशन ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कंडीशन ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है जो एक प्रोग्रामर लिखता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं जिसकी मदद से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइथन होता है, सॉलिडिटी होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिडिटी का इस्तेमाल करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखा जाता है। अब इन सारी की सारी चीजों के अलावा तुम ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ब्लॉकचेन के अंदर तुम्हें प्रोग्रामिंग करना है तो ऐसा करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल बिजनेस वालों को। ठीक है, तो इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सबके लिए ओपन होती है, सबके लिए अवेलेबल होती है। एंड देयर इज अ वेरी प्लस वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि क्यों ब्लॉकचेन इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल। आज के इस लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं ब्लॉकचेन। सबसे पहले तुम्हें ये समझ की जरूरत है कि सेंट्रलाइज नेटवर्क का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये समझने के बाद ही तुम ब्लॉकचेन को और ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। अगर मैं तुम्हें इन शॉर्ट कहूं तो सेंट्रलाइज नेटवर्क के अंदर बेसिकली एक सर्वर होता है और उस सर्वर के साथ अलग अलग नोड्स कनेक्टेड होते हैं। अभी नोड्स लैपटॉप्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं या मोबाइल हो सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, अलग अलग ऐसे डिवाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कंडीशन ओरिएंटेड प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। कंडीशन ओरिएंटेड प्रोग्राम का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो मेजरली कंडीशन के ऊपर रन करता है। कंडीशन का मतलब क्या होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ एल्स, इट इज अ कंडीशन। मतलब अगर ये हुआ तो वो होगा, अगर वो हुआ तो ये होगा, कैन दैट बी स्टफ। मतलब अगर सपोज प्रोग्राम के अंदर लेट्स से कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम के जिस पार्ट के लिए वो कंडीशन ट्रू है वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोग्राम के अंदर कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम के जिस पार्ट के लिए कंडीशन फॉल्स है वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को कहा जाता है कंडीशन ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कंडीशन ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो एक प्रोग्रामर कोडिंग के द्वारा लिख सकता है विद हेल्प ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हो सकता है, सॉलिडिटी हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सॉलिडिटी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि अगर तुम्हें ब्लॉकचेन के अंदर प्रोग्रामिंग करना है तो ऐसा करने के लिए तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अभी इन ब्लॉक्स में से एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट यहाँ पे समस्या ये है, या यहाँ पे एक पॉइंट जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो पॉइंट ये है कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करना पड़ता है ताकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो और उसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई है वो सारी की सारी चीजें पूरे के पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो अभी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को
अगर तुम्हें एक्टिवेट करना है तो ऐसा करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं या कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके मदद से इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट किया जा सकता है। और उन एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट्स है टाइम और सिचुएशन। अभी टाइम का मतलब क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा गया है कि 26 नवंबर 2023 को 11:05 पे सुबह ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाना चाहिए। अगर ये लिखा गया है तो एक्जैक्टली उसी डेट पे और उसी टाइम पे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा और उसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई है वो सारी की सारी चीजें पूरे के पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, और जो भी चीजें मैंने तुम लोग को पहले कही थी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंडीशन ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है, तो ये चीज और वो चीज दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती है। ये भी क्या, ये एट द एंड ऑफ द डे एक कंडीशन ही तो है। अगर ये टाइम और डेट आया तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करो, कंडीशन ही तो है। ठीक है, तो मतलब जो भी मैं कह रहा हूं वो सारी की सारी चीजें सही है। और दूसरा जो एलिमेंट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करने का वो है सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब होता है यूजर एक्शन। मतलब अगर सपोज एक बटन को दबाना एक्सपेक्टेड है एक यूजर से जिससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर यूजर वो एक्शन परफॉर्म करता है, अगर यूजर उस एक्सपेक्टेड बटन को दबाता है लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन ही है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये दो एलिमेंट्स है जिसकी मदद से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट या बेसिकली एक्टिवेट किया जा सकता है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की और ज्यादा गहराई में जाएंगे, इसका हम और ज्यादा गहराई में डिटेल में अभ्यास करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है पूरा का पूरा, और इस ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर बहुत सारे नोड्स है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब इमेजिन करो कि इन नोड्स में से कोई एक नोड ये चाहता है कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट कर दे। लेट्स से फॉर एग्जांपल डैन बिल्जेरियन ये चाहता है कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट कर दे और उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी चीजें लिखी गई है वो सारी की सारी चीजें पूरे के पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाए। अगर डैन बिल्जेरियन ये चाहता है तो उसको ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे ये सारी की सारी चीजें हो जाए पॉसिबल। तो ऐसा करने के लिए एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस आज हम एक छोटे से ब्रेक के बाद समझने वाले हैं। तो अभी हमारा जो डैन बिल्जेरियन है वो ये चाहता है कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करे। तो अभी ऐसा करने के लिए वो सबसे पहले क्या करता है, या सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसे पब्लिक की ब्रॉडकास्टिंग ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अब पब्लिक की ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि डैन बिल्जेरियन का जो पब्लिक की है वो पब्लिक की डैन पूरे के पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा। अब इसका मतलब क्या है, पब्लिक की को ब्रॉडकास्ट डैन कर रहा है, इसका मतलब ही ये है कि बाकी के सारे नोड्स को ये पता चल जाएगा कि डैन जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहता है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करना चाहता है। ठीक है, तो अभी ये जो पब्लिक की ब्रॉडकास्टिंग है ये प्रोसेस होने के बाद जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइवेट की डैन को प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रोसेस के बाद डैन के पास जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करना चाहता है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की आ जाएगी प्राइवेट की। ठीक है, डैन के पास उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइवेट की आ जाएगी और ये प्राइवेट की उसे कौन देगा, ब्लॉकचेन नेटवर्क उसको वो प्राइवेट की दे देगा। और ब्लॉकचेन नेटवर्क और एक काम करेगा विच इज उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो पब्लिक की है वो पब्लिक की बाकी सारे के सारे नोड्स को देगा। ठीक है, मतलब डैन के पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइवेट की आ गई और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो पब्लिक की है वो बाकी के सारे नोड्स के पास आ जाएगी। ठीक है, बाकी के सारे नोड्स के पास उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की पब्लिक की आ गई। अब जो डैन है वो एक मैसेज को जनरेट करता है। अब इस मैसेज के अंदर क्या होता है वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, बट डैन बेसिकली एक मैसेज को जनरेट करता है और उस जनरेट किए हुए मैसेज को इस प्राइवेट की का इस्तेमाल करके एनक्रिप्ट करता है। ठीक है, और फिर वो उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है, मतलब बेसिकली बाकी के नोड्स को दे देता है। अब तुम्हें ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर सपोज किसी चीज को प्राइवेट की का इस्तेमाल करके एनक्रिप्ट कर दिया गया हो तो उसी चीज को पब्लिक की का इस्तेमाल करके डिक्रिप्ट भी किया जा सकता है। तो जब ये एनक्रिप्टेड मैसेज बाकी के सारे नोड्स को मिलता है, ये बाकी के सारे नोड्स उस मैसेज को उनके पास जो पब्लिक कीज होती है उन पब्लिक कीज का इस्तेमाल करके डिक्रिप्ट करते हैं। अब इस मैसेज के अंदर क्या होता है, इस मैसेज के अंदर जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डेटा होता है वो डेटा उस मैसेज के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अभी जो सारे के सारे बाकी के नोड्स हैं उनको जब वो एनक्रिप्टेड मैसेज मिल जाता है तो उनके पास जो पब्लिक की थी उस पब्लिक की मदद से उस एनक्रिप्टेड मैसेज को वो लोग डिक्रिप्ट करते हैं। और उसके बाद अगर 50% से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली, मतलब अगर अप्रोक्सीमेटली 50% से ज्यादा नोड्स उस मैसेज को वेरीफाई करके वैलिडेट कर देते हैं, मतलब उस मैसेज को हाँ परमिशन दे देते हैं, यस परमिशन दे देते हैं, थम्स अप दे देते हैं, तो वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसे डैन बिल्जेरियन एक्टिवेट करना चाहता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा और उसके अंदर जो भी लिखा गया है वो चीज पूरे के पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, या वो चीज हर एक नोड के ऊपर अप्लाई हो जाएगी क्योंकि हर एक नोड पूरे के पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क का सदस्य है, पूरे के पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा है। तो बेसिकली ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें मेरे नोट्स के बारे में बताना चाहता हूं। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो ऐसा करने के लिए तुम्हें आंसर्स एक प्रॉपर तरीके से लिखने पड़ता है विद प्रॉपर डायग्राम, और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे जिनको इस्तेमाल करके या जिनको पढ़ के आप बहुत ही ज्यादा इजीली एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर अभी भी एक छोटा सा डाउट है जो मैं अभी क्लियर करने वाला हूं, और वो डाउट शायद से ये है कि तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहा था, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है, बट यहाँ पे कहीं भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेंशन ही नहीं किया गया है। देखो यहाँ पे मैंने तुम लोग को बोला था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, लाइक यहाँ पे मैंने तुम लोग को बोला था कि ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होता है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है और उन ब्लॉक्स में से किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क है, इस ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स हैं हर एक नोड के पास ब्लॉकचेन की कॉपी है, मतलब जो ब्लॉकचेन की कॉपी इस नोड के पास होगी वही ब्लॉकचेन की कॉपी इस नोड के पास होगी, वही ब्लॉकचेन की कॉपी इस नोड के पास होगी, वही कॉपी इस नोड के पास होगी और वही कॉपीज बाकी हर एक नोड के पास होगी। और ब्लॉकचेन के अंदर ही तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं जिनमें से एक ब्लॉक के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। तो अगर ब्लॉकचेन की कॉपी सबके पास है इसका मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी सबके पास है, और इसलिए यहाँ पे ये बीसी लिखा गया है, बीसी का मतलब ब्लॉकचेन, तो उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये है। अब ये हमारा इस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय। इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहला टाइप है स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इमेजिन करो कि तुम
किसी इंसान से एक सेकंड हैंड कार परचेस कर रहे हो, ओके। अब जब तुम उससे वो कार परचेस कर रहे हो तब तुम दोनों के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसके अंदर अलग अलग चीजें लिखी हुई होती है और तुम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके उस कॉन्ट्रैक्ट को अग्री करते हो। और तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी सेल करने के बाद 10 दिन बाद वो आदमी आता है और तुम्हें बोलता है कि नहीं नहीं अब तो ये गाड़ी मेरी है, मैं तो इसका ओनर था, ये गाड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है, तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तो उस सिचुएशन में अगर तुमने लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन करके रखा है तो तुम इस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को उसको दिखा के ये बोल सकते हो कि नहीं भाई ये तेरी कार पहले थी बट अब ये तेरी गाड़ी नहीं है, ये अब गाड़ी मेरी हो चुकी है और उसके बदले में मैंने देखो इतने इतने पैसे दिए हैं, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि तुमने उसको कितने पैसे दिए हैं। और क्योंकि तुम दोनों ने भी उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करके उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को अग्री करके रखा है, इसीलिए वो तुम्हें अब ये नहीं कह सकता कि वो गाड़ी उसकी है, अब वो गाड़ी तुम्हारी हो चुकी है। तो बेसिकली फिजिकल दुनिया में लीगल कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंस ये होता है और बेसिकली ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। बट स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? देखो, ब्लॉकचेन के अंदर अगर किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को हम स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अब स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है या हाउ इज दिस डिफरेंट एंड बेटर और एटलीस्ट डिफरेंट देन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स? देखो, अभी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, इमेजिन करो कि तुम मैं मेरा खुद का एग्जांपल लेता हूं, मुझे ना एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद है, खास करके कैट्स, ठीक है। बट जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ रेंट देके, जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, इस फ्लैट का रेंट लाइक 15 to 20,000 है। तो अभी जब मैंने फ्लैट परचेस किया था ऑब्वियसली मैंने ओनर के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, राइट। तो अभी उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि भाई इस फ्लैट में ना बिल्लियां लाना, डॉग्स लाना, कोई भी पेट लाना अलाउड नहीं है। बट फिर भी जब मैं शाम को वॉक करने के लिए मेरे सोसाइटी में नीचे जाता हूँ मुझे बहुत सारी बिल्लियां दिखती है, तो कभी कभी उनमें से एक या दो बिल्लियां मैं मेरे फ्लैट में लेके आता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एनिमल्स पसंद है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो रूल था विच वॉज कि तुम फ्लैट में पेट्स ला नहीं सकते, उस रूल को मैंने ब्रेक किया, ओके। तो अब बिल्ली को लाते हुए अगर किसी ने मुझे देख लिया या अगर मेरे ओनर ने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो मुझे फाइन लग सकती है। बट अगर बिल्ली को लाते हुए किसी ने भी मुझे नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मैंने रूल को ब्रेक किया बट फिर भी मुझे पनिशमेंट मिली नहीं, ऐसा होगा अगर किसी ने भी मुझे नहीं देखा तो बेसिकली लीगल कॉन्ट्रैक्ट में ये है यहां पे, इसलिए कि अगर तुमने रूल को ब्रेक किया तो चांसेस आर कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी एंड देयर आर आल्सो चांसेस कि तुम बच जाओगे। बट व्हेन इट कम्स टू स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता। स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर तुमने किसी रूल को ब्रेक किया तो उस रूल को ब्रेक करने का जो भी पनिशमेंट है 100% तुम्हें उस पनिशमेंट को भुगतना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक रूल है और कोई नोड या कोई यूजर उस रूल को ब्रेक करता है तो अभी उस स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर तुमने उस रूल को ब्रेक किया तो तुम्हें क्या क्या पनिशमेंट्स भुगतनी पड़ेगी, वो भी पनिशमेंट्स होती है। तो अगर उस यूजर ने उस रूल को ब्रेक किया तो 100% उस यूजर को जो भी पनिशमेंट्स है वो उन पनिशमेंट्स को भुगतना पड़ेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली ये है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज डैप। कुछ लोग इसे डी ऐप भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, राइट। अब अगर तुम्हें किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट करना है तो ऐसा करने के लिए तुम्हें एक कम्युनिकेशन लेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस कम्युनिकेशन लेयर के थ्रू ही तुम उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन लेयर है ये कम्युनिकेशन लेयर ही डैप है या ये कम्युनिकेशन लेयर ही डी ऐप है, ठीक है। और ऐसा कैसे होता है? देखो, एक लाइन बोलूंगा और उस लाइन की वजह से तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डैप जो होता है या डी ऐप जो होता है वो बेसिकली ब्लॉकचेन एनेबल्ड वेबसाइट होता है या बेसिकली डी इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहला टाइप है स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इमेजिन करो कि तुम किसी इंसान से एक सेकंड हैंड कार परचेस कर रहे हो, ओके। अब जब तुम उससे वो कार परचेस कर रहे हो तब तुम दोनों के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसके अंदर अलग अलग चीजें लिखी हुई होती है और तुम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके उस कॉन्ट्रैक्ट को अग्री करते हो। और तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी सेल करने के बाद 10 दिन बाद वो आदमी आता है और तुम्हें बोलता है कि नहीं नहीं अब तो ये गाड़ी मेरी है, मैं तो इसका ओनर था, ये गाड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है, तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तो उस सिचुएशन में अगर तुमने लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन करके रखा है तो तुम इस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को उसको दिखा के ये बोल सकते हो कि नहीं भाई ये तेरी कार पहले थी बट अब ये तेरी गाड़ी नहीं है, ये अब गाड़ी मेरी हो चुकी है और उसके बदले में मैंने देखो इतने इतने पैसे दिए हैं, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि तुमने उसको कितने पैसे दिए हैं। और क्योंकि तुम दोनों ने भी उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करके उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को अग्री करके रखा है, इसीलिए वो तुम्हें अब ये नहीं कह सकता कि वो गाड़ी उसकी है, अब वो गाड़ी तुम्हारी हो चुकी है। तो बेसिकली फिजिकल दुनिया में लीगल कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंस ये होता है और बेसिकली ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। बट स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? देखो, ब्लॉकचेन के अंदर अगर किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को हम स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अब स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है या हाउ इज दिस डिफरेंट एंड बेटर और एटलीस्ट डिफरेंट देन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स? देखो, अभी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, इमेजिन करो कि तुम मैं मेरा खुद का एग्जांपल लेता हूं, मुझे ना एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद है, खास करके कैट्स, ठीक है। बट जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं रेंट देके, जिस फ्लैट में मैं रहता हूं, इस फ्लैट का रेंट लाइक 15 to 20,000 है। तो अभी जब मैंने फ्लैट परचेस किया था ऑब्वियसली मैंने ओनर के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, राइट। तो अभी उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि भाई इस फ्लैट में ना बिल्लियां लाना, डॉग्स लाना, कोई भी पेट लाना अलाउड नहीं है। बट फिर भी जब मैं शाम को वॉक करने के लिए मेरे सोसाइटी में नीचे जाता हूं मुझे बहुत सारी बिल्लियां दिखती है, तो कभी कभी उनमें से एक या दो बिल्लियां मैं मेरे फ्लैट में लेके आता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे एनिमल्स पसंद है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो रूल था विच वॉज कि तुम फ्लैट में पेट्स ला नहीं सकते, उस रूल को मैंने ब्रेक किया, ओके। तो अब बिल्ली को लाते हुए अगर किसी ने मुझे देख लिया या अगर मेरे ओनर ने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो मुझे फाइन लग सकती है। बट अगर बिल्ली को लाते हुए किसी ने भी मुझे नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मैंने रूल को ब्रेक किया बट फिर भी मुझे पनिशमेंट मिली नहीं, ऐसा होगा अगर किसी ने भी मुझे नहीं देखा तो बेसिकली लीगल कॉन्ट्रैक्ट में ये है यहाँ पे, इसलिए कि अगर तुमने रूल को ब्रेक किया तो चांसेस आर कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी एंड देयर आर आल्सो चांसेस कि तुम बच जाओगे।
बट व्हेन इट कम्स टू स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता। स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर तुमने किसी रूल को ब्रेक किया तो उस रूल को ब्रेक करने का जो भी पनिशमेंट है 100% तुम्हें उस पनिशमेंट को भुगतना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक रूल है और कोई नोड या कोई यूजर उस रूल को ब्रेक करता है तो अभी स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर तुमने उस रूल को ब्रेक किया तो तुम्हें क्या क्या पनिशमेंट्स भुगतनी पड़ेगी, वो भी पनिशमेंट्स होती है। तो अगर उस यूजर ने उस रूल को ब्रेक किया तो 100% उस यूजर को जो भी पनिशमेंट्स है वो उन पनिशमेंट्स को भुगतना पड़ेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली ये है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज डैप। कुछ लोग इसे डी ऐप भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, राइट। अब अगर तुम्हें किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट करना है तो ऐसा करने के लिए तुम्हें एक कम्युनिकेशन लेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस कम्युनिकेशन लेयर के थ्रू ही तुम उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन लेयर है ये कम्युनिकेशन लेयर ही डैप है या ये कम्युनिकेशन लेयर ही डी ऐप है, ठीक है। और ऐसा कैसे होता है, देखो एक लाइन बोलूंगा और उस लाइन की वजह से तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डैप जो होता है या डी ऐप जो होता है वो बेसिकली ब्लॉकचेन एनेबल्ड वेबसाइट होता है, या बेसिकली डी ऐप इज अ ब्लॉकचेन एनेबल्ड वेबसाइट एंड इस तरीके से इट इज अ कम्युनिकेशन लेयर जिसकी मदद से तुम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज डाओ। डाओ का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है तो ऐसा करने के लिए डाओ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल बिली बुचर को अरियाना ग्रांडे के साथ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है। बिली बुचर को उसे एक्स अमाउंट ट्रांसफर करना है, जो कि वो करता भी है, ठीक है। अब जब बिली बुचर एक्स अमाउंट अरियाना ग्रांडे को ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफर होने के बाद जो बाकी के नोट्स है उन्हें यह पता चलेगा कि किसी एक नोड ने किसी दूसरे नोड को एक्स अमाउंट ट्रांसफर किया है, बट इन बाकी के नोड्स को यह नहीं पता चलेगा कि किसने किसको वो एक्स अमाउंट ट्रांसफर किया, ठीक है। मतलब बेसिकली उनको ये नहीं पता चलेगा कि बिली बुचर ने अरियाना को एक्स अमाउंट ट्रांसफर किया। उनको बस ये पता चलेगा कि भाई हमारे नेटवर्क के अंदर एक नोड था, एक नोड कोई है और उस नोड ने एक किसी दूसरे नोड को वो जो एक्स अमाउंट है वो एक्स अमाउंट ट्रांसफर किया। ऐसा इन बाकी के नोड्स को पता चलेगा, इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक नोड का एक कोड होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये ट्रांसपेरेंसी डाओ प्रोवाइड करता है। और अब डाओ के बारे में तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है, विच इज कि डाओ के अंदर ऐसे कुछ टास्क्स होते हैं जिनको ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं और इसीलिए डाओ के अंदर कभी कभी ह्यूमन इंटरवेंशंस भी होते हैं। ठीक है। अब अगर तुम्हें लेक्चर एग्जाम के लिए देख रहे हो तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो तुम्हें आंसर्स एक प्रॉपर तरीके से लिखने पड़ेंगे। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको ट्रांसफर किया, ठीक है। मतलब बेसिकली उनको ये नहीं पता चलेगा कि बिली बुचर ने अरियाना को एक्स अमाउंट ट्रांसफर किया। उनको बस ये पता चलेगा कि भाई हमारे नेटवर्क के अंदर एक नोड था, एक नोड कोई है और उस नोड ने एक किसी दूसरे नोड को वो जो एक्स अमाउंट है वो एक्स अमाउंट ट्रांसफर किया। ऐसा इन बाकी के नोड्स को पता चलेगा, इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक नोड का एक कोड होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये ट्रांसपेरेंसी डाओ प्रोवाइड करता है। और अब डाओ के बारे में तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है, विच इज कि डाओ के अंदर ऐसे कुछ टास्क्स होते हैं जिनको ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं और इसीलिए डाओ के अंदर कभी कभी ह्यूमन इंटरवेंशंस भी होते हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हें लेक्चर एग्जाम के लिए देख रहे हो तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो तुम्हें आंसर्स एक प्रॉपर तरीके से लिखने पड़ेंगे। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे एक प्रॉपर तरीके से लिखे हुए, जिनको पढ़ के आप एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच। इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर से हम पब्लिक ब्लॉकचेन का अभ्यास करना चालू करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ब्लॉकचेन के बारे में कुछ पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि 2019 की जितनी भी टॉप 10 स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज थी उन टॉप 10 स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज में से एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी थी ब्लॉकचेन। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन यानी कि आईडीसी के हिसाब से 2021 तक ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस के ऊपर 9.7 बिलियन डॉलर्स का एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को तुम्हें बता के मैं तुम्हें बताना क्या चाहता हूं, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा पोटेंशियल है या इस टेक्नोलॉजी के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अब ब्लॉकचेन जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एक होता है पब्लिक ब्लॉकचेन और एक होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन। तो आज से हम पब्लिक ब्लॉकचेन का अभ्यास करना चालू करने वाले हैं। तो अभी पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन्स है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन इज बिटकॉइन एंड सेकंड इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन इज इथेरियम। हम इथेरियम को कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे। अब इथेरियम को कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उन सारी की सारी चीजों को हम इथेरियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या मोस्ट ऑफ द चीजों को हम इथेरियम को कंसीडर करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब पब्लिक ब्लॉकचेन के बारे में जो सबसे पहली चीज तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम पब्लिक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि पब्लिक ब्लॉकचेन एक ऐसा ब्लॉकचेन है जिसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है और सिर्फ ज्वाइन ही नहीं बल्कि ज्वाइन करके उसके अंदर ट्रांजैक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। और इसीलिए हम पब्लिक ब्लॉकचेन को परमिशन लेस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या परमिशन लेस ब्लॉकचेन भी कहते हैं। अब हम पब्लिक ब्लॉकचेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखो सबसे पहले एनर्जी कंजम्पशन, इसका एनर्जी कंजम्पशन जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। सेकंड स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शंस, इसका जो स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। एनर्जी कंजम्पशन इज वेरी हाई, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन इज लो, राइट। सेकंड टाइप ऑफ नेटवर्क, किस प्रकार का नेटवर्क है ये? पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ नेटवर्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस नेटवर्क के अंदर कोई एक एंटिटी नहीं होती जिसके ऊपर सारा का सारा कंट्रोल होता है, ठीक है। सारा का सारा कंट्रोल इज डिवाइडेड अमंगस्ट ऑल द नोड्स इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क या इन द पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है। कोई एक एंटिटी नहीं होती जिसके पास सारा का सारा कंट्रोल होता है, सारा का सारा कंट्रोल इज डिवाइडेड अमंगस्ट ऑल द नोड्स इन द
पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क बेसिकली सारे के सारे नोड्स के पास इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रोल होता है। ओके, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क या सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिसके अंदर एक एंटिटी होती है जिसके पास सारा का सारा कंट्रोल होता है, जिसके पास सारी सारी पावर होती है। बट ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, इसके अंदर एक एंटिटी नहीं है जिसके पास सारा का सारा पावर है, सारा का सारा कंट्रोल है, सारे के सारा कंट्रोल है, सारा का सारा पावर इज डिवाइडेड अमंगस्ट ऑल द नोड्स, राइट। नेक्स्ट, इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी मतलब देखो, इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर अगर सपोज एक ट्रांजैक्शन लेजर के अंदर स्टोर हो गया तो फिर उस ट्रांजैक्शन को उस लेजर से कोई भी मिटा नहीं सकता, उस ट्रांजैक्शन को उस लेजर से कोई भी हटा नहीं सकता, तो इसे कहा जाता है इम्यूटेबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्केलेबिलिटी। अब ये जो पब्लिक ब्लॉकचेन है ज्यादा स्केलेबल नहीं होता, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पब्लिक ब्लॉकचेन की जो स्केलेबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, और एक दूसरे भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि पब्लिक ब्लॉकचेन की जो स्केलेबिलिटी है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि उस पब्लिक ब्लॉकचेन में कितने नोड्स है। ओके, उस पब्लिक ब्लॉकचेन में कितने नोड्स है ये एक मेजर फैक्टर होता है जिसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि उस पब्लिक ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी कितनी है, या बेसिकली वो पब्लिक ब्लॉकचेन कितना स्केलेबल है। और इसके अलावा भी और कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंडविड्थ, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टोरेज वगैरह वगैरह वगैरह, बट कितने नोड्स है ये मेजर फैक्टर होता है। अब अगर तुमने लेक्चर ध्यान देकर देखा होगा तो तुम्हें ये पता होगा कि लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को बोला था कि दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन होता है, एक होता है बिटकॉइन और दूसरा होता है इथेरियम। मैंने तुम लोगों को बोला था कि हम इथेरियम को कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि भाई तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि यार अगर ऐसा है तो इथेरियम पब्लिक ब्लॉकचेन और बिटकॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन में फर्क क्या है। देखो, अगर सपोज हमने बिटकॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन को कंसीडर किया तो अगर तुम्हें ऐसे ट्रांजैक्शंस करने हैं जो फाइनेंशियल इन नेचर है तो उस सिचुएशन में तुम्हें बिटकॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तुम्हें उस सिचुएशन में बिटकॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना ज्यादा बेटर होगा। ओके, और अगर तुम्हें एक बेसिकली सर्कल बनाना है, एक बेसिकली एक एरिया ऑफ पीपल के अंदर ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग का सोसाइटी, लाइक इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। तो अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर तुम्हें ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करना है तो इट्स बेटर टू ऑप्ट फॉर इथेरियम पब्लिक ब्लॉकचेन, ठीक है। और इथेरियम पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, उसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं। बट देन ये सेपरेशन क्यों है? देखो, बिटकॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन और इथेरियम पब्लिक ब्लॉकचेन दोनों के अपने अपने कुछ इंपॉर्टेंसेस हैं, और उन इंपॉर्टेंसेस के वजह से ऐसा है, और वो इंपॉर्टेंसेस क्या है वही हम पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस लेक्चर के आगे के सारे लेक्चर्स और इस लेक्चर के पीछे के सारे लेक्चर्स आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू। आज हम ये समझने वाले हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा वीडियो होने वाला है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन का पार्ट है नहीं, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस इज फाउंडर। बिटकॉइन का जो फाउंडर है दैट इज सतोशी नाकामोटो, एंड इथेरियम का जो फाउंडर है दैट इज विटालिक ब्यूटेरियन, ओके, एंड दैट इज वी बाय द वे, इट्स नॉट आर। और सिर्फ विटालिक ब्यूटेरियन नहीं है इसका फाउंडर, इसके साथ उसका टीम भी है, इसलिए यहाँ पे विटालिक ब्यूटेरियन एंड अदर्स लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इज पर्पस। बिटकॉइन का पर्पस क्या है? ट्रांजैक्शन इन क्रिप्टो करेंसी, या बेसिकली क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, ये बिटकॉइन का पर्पस है। और इथेरियम का क्या पर्पस है? देखो, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन इन क्रिप्टो करेंसी ये सब इथेरियम के अंदर होता ही है, बट उसके साथ साथ इथेरियम अलग अलग नेटवर्क सॉफ्टवेयर के अंदर भी यूज किया जा सकता है, तो वो उसका मेन पर्पस है, राइट। थर्ड इज रिलीज डेट। बिटकॉइन जो है वो जनवरी 2009 में रिलीज हुआ था, एंड जो इथेरियम है वो अभी रिलीज हुआ था, व्हिच वाज जुलाई 2015। नेक्स्ट फोर्थ, एवरेज ब्लॉक टाइम, मतलब बिटकॉइन के अंदर एक ब्लॉक बनने के लिए कितना समय लगता है? बिटकॉइन के अंदर एक ब्लॉक बनने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद इथेरियम के अंदर एक ब्लॉक बनने के लिए अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 सेकंड लग जाते हैं, राइट। उसके बाद जो बिटकॉइन का कॉइन सिंबल है दैट इज BTC, एंड जो इथेरियम का कॉइन सिंबल है दैट इज ETH। उसके बाद नेक्स्ट इज टोकन्स। बिटकॉइन के अंदर टोकन्स अवेलेबल नहीं है और इथेरियम के अंदर टोकन्स अवेलेबल है, और इसके बारे में हमने पढ़ा था, ओके। नेक्स्ट इज ब्लॉक लिमिट। बिटकॉइन के अंदर एक ब्लॉक 1 MB का हो सकता है या 1 MB तक हो सकता है, और इथेरियम के अंदर ब्लॉक की कोई लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट इज हैश एल्गोरिथम। बिटकॉइन के अंदर SHA-256 हैश एल्गोरिथम यूज किया जाता है, एंड इथेरियम के अंदर अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई हैव नो आईडिया, बट बेसिकली दिस 256 ये हैश एल्गोरिथम यूज किया जाता है इथेरियम के अंदर। नेक्स्ट पॉपुलैरिटी। बिटकॉइन जो है वो मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, और जो इथेरियम है दैट इज सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी। लास्ट, टोटल कॉइन सप्लाई। देखो, बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन तक ही माइन किए जा सकते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हो सकते हैं, एंड द सप्लाई ऑफ इथेरियम इज अनलिमिटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम गैस का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि टोकन का मतलब क्या होता है। इमेजिन करो कि तुम 2 लाख रुपए लेकर कसिनो के अंदर गए हो, जिसका नाम है कसिनो रॉयल, ओके। अब अगर तुम अपने रियल लाइफ में कभी किसी कसिनो के अंदर गए होंगे, या अगर तुमने कभी वैसी मूवीज देखी होगी जैसे फॉर एग्जांपल दीस मूवीज कॉल्ड एज रेस टू एंड बदमाश कंपनी, तो तुम्हें ये पता होगा कि कसिनो के अंदर अगर तुम्हें कसिनो के गेम्स खेलने हैं तो जो कैश लेकर तुम गए हो उस कैश की मदद से तुम इन गेम्स को खेल नहीं सकते। तुम्हें सबसे पहले उस कैश की मदद से उस कसिनो के चिप्स You know how your phone can actually have a bunch of different applications? There's Facebook and Instagram and Gmail and YouTube. They're basically all applications that run code that was created by the company so that you can interact with their company. Well, a dApp, or a decentralized application, is very similar in how it works. Except instead of reporting back to Facebook servers or TikTok servers, this app reports back to the blockchain. You're simply interacting with the blockchain through the application. Welcome to Whiteboard Crypto, the #1 YouTube channel for crypto education, and here we explain topics of the cryptocurrency world using analogies, stories, and examples so that you can easily understand them. In this video, we're going to explain exactly what a dApp or decentralized application is
how they work, and why they might hold the key to the future of the technology. First, we're going to go over some of the benefits of dApps, and then we're going to cover the different types of them, including a bunch of specific examples. The first thing you need to know is that dApps can only be built on smart contract networks. This means a blockchain like Bitcoin cannot utilize dApps. Bitcoin was designed to only allow the sending of its native coin. Ethereum, however, can utilize something called smart contracts, which is code that makes up a program so that it can be ran to do more complicated things. You should check out our video on smart contracts so that you're not confused throughout this video, but in short, they allow two people to make an agreement written in code so that they don't have to trust a third party to follow through. They can simply just trust the code. Another benefit is that since the code is out there to be run, it is what we call open source, which means anyone can look at the code. This allows a lot more trust to be given to the application. We can't really look at how Facebook recommends us friends to interact with, or how Google knows what we ate for dinner, but with any smart contract, we can actually look at the code and see how it works. This is a big benefit over centralized applications. Next, dApps are also censorship resistant, and this is a fancy way of saying they don't have to answer to governments or corporations or even specific people. If the smart contract is coded to do something and it's triggered, nobody can stop it. Naturally, this is good and bad, but it's really important for financial applications. This way, nobody can control your money. In history, governments that have done a lot of bad things have had the control of their citizens' money. There have also been cases where Facebook or Twitter can actually ban or censor certain people based on their views or opinions. A decentralized application will not allow this, unless it's written to. Another big benefit of decentralized applications is that they will essentially never go offline. Now, there's been times where I've actually seen Facebook or even YouTube down. Maybe their servers have a bug or there's an outage or they simply just do not work. It's usually for a very short period of time because there's a lot of money involved, but technically the government could come in and just shut them down. Since dApps run on the blockchain, they will actually never go down because they are run by hundreds of thousands of computers all around the world. It would be infeasible to turn them all off. If not, it's impossible. So now that you know what makes dApps so cool, let's get into some examples of them. First off, let's start off with financial dApps. There are actually many decentralized applications that provide a way for people to invest in something called decentralized finance. Decentralized finance, or DeFi, is a new monetary protocol that uses blockchain to allow investors to do new things and even some old things with their money with a ton of new benefits. Let's go over some of the ways a dApp may use your money. Number one, borrowing and lending. So Aave is a platform that allows a user to deposit their Ethereum or Matic tokens to certain smart contracts. Whenever you deposit these coins and tokens, you can actually receive an interest rate on them, allowing you to basically invest with them. Aave also lets you borrow tokens, basically if you have enough collateral already deposited. So without going too much in depth, this allows you to borrow at different interest rates and even create specific margin positions. If you want to learn more about Aave, we've actually created a specific video over this topic. Number two is providing liquidity. So providing liquidity is actually a very complicated idea, but we're going to make it simple. In short, there is not much money in the tokens out there to trade. So investors can come along, buy and even create specific margin positions. If you want to learn more about Aave, we've actually created a specific video over this topic. Number two is providing liquidity. So providing liquidity is actually a very complicated idea, but we're going to make it simple. In short, there is not much money in the tokens out there to trade. So investors can come along, buy these tokens, and then invest them in what is called a liquidity pool, which allows other people to trade back and forth using their tokens. The traders pay a small fee that allow the investors to earn a return for their investment. It's a win-win situation. And number three are exchanges. Now, as I mentioned, allowing traders to find a way to actually buy and sell their tokens is one of the issues in the decentralized finance world. Exchanges are decentralized applications that allow traders to take some of their tokens and trade them for another token, usually with really low fees, almost instantaneously, and without needing any background checks or identification verification. That was a mouthful, but what it means is that you can sell $1 million of Ethereum without anyone blinking an eye or asking any questions. By the way, these exchanges are actually called DEXs, which stands for decentralized exchange. Next up on the menu, we have game dApps. Now, of course, there's going to be games. I mean, programmers are the ones creating these dApps, so they're going to find a way to gamify the space. Number one is CryptoKitties. So CryptoKitties is a decentralized application that allows you to buy these little cute kittens. Technically, what you are buying is the NFT data of rights to that certain token that represents the kitty. However, the fun part of this game is that you can actually collect a bunch of these kittens and even breed them to create more kittens. In the community, the older generation kittens are usually the most valuable, and you can actually sell them for a profit or maybe sometimes a loss if you play the game long enough. Even more so, you can actually rent out your kitten to breed with someone else's kitten as a strange form of passive income on the blockchain. Number two is something called Zrun. Zed is technically a gambling application since you buy NFTs that represent racing horses and then race them. Every horse has specific skills and a point system. Also, every race is recorded on the blockchain, so you can see all of the races, including the races your horses have won or lost in. Now, this game actually went viral for a while because it combined the psychological pulls of gambling with the virality of a blockchain game. Number three is basically gambling. So just like Zed is technically a gambling app, there is an absolute massive list of blockchain gambling websites out there that are technically decentralized applications. There are dApps that allow you to play games like poker, slots, roulette, even simpler games like dice rolling or coin tossing. In fact, you can actually code these applications so that the house always wins, even if it's by 1%, but people love playing these games. Our next category is tracking apps. So there are actually many applications out there that read
smart contract data and information from the blockchain to display it to you. Technically, these are decentralized applications, but they're usually centralized and hosted on a single web server, and in most cases don't require the blockchain-specific code to work. However, they do read the data from the blockchain, so we thought they deserved a spot on this list. So Zappify is actually a website that collects information about wallets that you have and then displays it all on one page. Not only will it look at all the major dApps out there and find out how much money or coins you have, it'll do it for many different networks as well. Zappify is one of my favorites because it's free to use, and I can actually see a dashboard of my entire blockchain portfolio in one place. Now you should know there are many different applications like Zappify, but we thought we'd share the one that we use. The next category is marketplaces. Number one is CryptoKitties. Again, even though we put CryptoKitties in the game category, it deserves its own spot in the marketplace category. CryptoKitties has proven themselves to be an asset that people went crazy over in the last few years. The price of some of these CryptoKitties has skyrocketed, and their dApp that allows you to buy and sell these NFT kitties is paving the ground for mass adoption. Number two is Rarible. So Rarible and Air NFTs are two marketplaces for other NFTs that allow you to buy, sell, and even create new NFT art that you specifically can sell. These platforms or applications facilitate the process and allow the interaction with the blockchain so an everyday person can use it. Lastly, as an example of a marketplace app, we have Bidali. Bidali is a decentralized application that allows you to buy things using your crypto. One of their main products is basically gift cards, which they can actually deliver anonymously and very quickly. Remember, whenever you buy stuff with crypto, in the United States at least, it is currently reported as a sale, and because of that, you have to pay taxes. Although, Bidali does not report to the IRS, so the liability is in your hands. You may see what we're saying here. Anyways, before we get ourselves into trouble, let's move on to the next category, which is educational. So this is still an early announcement, but we are actually currently developing our website into a decentralized application where you can complete quizzes, watch videos, read articles, and gain XP through your MetaMask wallet. Once you have enough experience, you can then mint limited edition NFTs through our platform. If you're interested, leave a comment if you want to be an early tester. One last dApp that doesn't really fit into any of these categories is something called ENS. ENS stands for Ethereum Name Service, and we actually have an entire video explaining how it works. In short, ENS turns those long Ethereum addresses into any address that you want. For example, we actually own whiteboardcrypto.eth, so if you send any of your coins or tokens there, it'll go to our wallet. Now, as we end this video, you need to know that the categories that we listed are just the major ones we wanted to share. This space is incredibly new, and there are new dApps being built every day. In fact, blockchain developers are one of the highest paying jobs this year, simply because there is so much money being poured into the space, and there's a lack of people knowing how to code it. The sky's the limit, and we truly believe this space has a lot of potential for positive growth. Maybe some of the best developers that will ever be may use our videos as resources to learn and be inspired. At least that's our goal. Thank you guys so much for watching this video. We hope that you enjoyed it. We really hope that you learned something, and most of all, as always, we hope to see you in the next video. I recently built a chat app that can handle thousands of messages per second, scales around the world, and costs me nothing to run. But the real weird thing about it is that the data and infrastructure is not controlled by a big tech company. Instead, it's decentralized across the entire user base using web technologies. In fact, you can chat with me right now on the live demo by going to gunchatdap.web.app. Again, that's gunchatdap.web.app. And I'm trusting you not to hack it to pieces this time. In today's video, we'll build a decentralized chat app, or dApp if you prefer, similar to YouTube Super Chat, using a library called Gun.js. In the process, you'll learn about the benefits of building a decentralized app, along with the weird trade-offs and challenges. For the front-end UI, we'll use Svelte, a JavaScript library that's not sponsored by big tech. If you're new here, like and subscribe, and you'll find the full source code on GitHub. Then I want to give a shout out to Mark Nadal, the creator of Gun.js, who donated a bunch of his time to answer all my questions and help make this video happen. Before we jump into the code, let's first answer the question of how does this thing actually work? I made a short video about Gun.js a few weeks ago, and you guys had a ton of questions about it. At a high level, Gun.js is a decentralized graph database. A normal database would store all of your data in a hard disk somewhere in the cloud. It may be sharded across multiple machines, but for all intents and purposes, you can imagine your entire dataset on a single disk. Gun, on the other hand, stores a small subset of data on each user based on the actual data that they consume in the application. When a user makes a query for some data, it will search across the network for other users that have that data and sync it up using technologies like WebRTC. So you can think of the entire database as the union of all peers on the network. The idea is very similar to a blockchain ledger where no one individual has control of the entire network. But it's important to point out that this is not blockchain technology, which tends to be too slow and just unnecessary to build something like a super chat. However, it does rely heavily on cryptography to implement things like user authentication. When you create a new user account, a cryptographically secure key pair is generated.
The username is associated with a public key so pass messages can be found, and the password is a proof of work seed to prove and decrypt access to the account's private keys. In addition, it's possible to implement end-to-end encryption, which we'll do in this demo, but we'll talk more about that later in the video. Another good question is, how is data persisted, and what happens if a user just clears out their browser cache? By default, data is stored in the browser's local storage, which is limited to 5 megabytes. And if a user clears out the data in local storage, it could potentially be lost if it's not somewhere else on the network. That's probably not acceptable if you're building a production-grade app, but what you can do is deploy a relay server that uses a different storage mechanism called radix that can store a lot more data on the disk of an actual server. And that makes the network more robust because a query can fall back to a relay if it's not available from another peer. Now, another really important concept to understand is that when you create a node in the database, it'll be available to the entire decentralized network. That means another developer can easily access your public data by simply knowing the name of the node where it's stored. Now, it is possible to encrypt data and things like that, but it just requires a completely different mental model than you might be used to. Let's go ahead and jump into the source code. I'm not going to cover every single line of code in this project, and instead just focus on the important parts related to the database. What we have here is a Svelte app with two main features: email password user authentication, and then a massive group chat room that anybody can join. The only dependency in this project is gun, which can be installed with npm. The first thing we'll focus on is user authentication, and to do that, I'm creating a file called user.js. At the top of the file, we'll import gun, and below that, import two supporting libraries. The first one, C, which stands for Security, Encryption, and Authorization, and is the module that enables user authentication. Next, we have AX, which stands for Advanced Exchange Equation, and is basically an alternative way to connect peers together and tends to be more performant for a chat app like this, and there's a whole doc on it if you want to learn more. From there, we'll create a variable called db to initialize the database. Then we'll use it to make a reference to the currently authenticated user. I'm also chaining the option of recall to session storage here, so the user stays logged in between browser sessions. Now, to manage the user in the app, we need to know if the user is logged in, and we also want their username so we can show it in the UI. We can get the username by making a reference to the user, then calling get alias, which will be the value of whatever username they choose when they sign up. Now, we're going to use this value frequently throughout the application, so I'm importing writable from Svelte store to make it reactive. A store is like an observable value that will re-render the UI whenever it's changed, and it can be shared across multiple components. So whenever the alias for the current user updates, we'll set the value of the store to that value. But we also want to listen to changes to the auth state when the user signs in or signs out. To handle that, we'll listen to the auth event on the database and basically do the same thing here where we fetch the alias and then set that as the value on the store. Now, I'm going to kind of do things in reverse here because I first want to show you how the store works in Svelte. We have this header component here that will show the title of the app if you're not logged in, but if you are logged in, it'll show your username as well as your avatar. Now, implementing sign out is really easy. All we have to do is import the username store and the gun user object. Then we'll create a function called sign out that calls leave on the user and sets the username store to an empty string. Then down in the HTML, we have a button that when clicked will call the sign out function. But we only want to show that button if the user is signed in. And the way we can tell if a user is signed in is if their username is present. The cool thing about Svelte is that we can easily do that with a store in any component by adding an if statement followed by a $sign and then the name of the store. The $sign will subscribe to the store and react to any changes that happen to it. If the username does exist, then we'll go ahead and show the username by subscribing to the store once again. We can also do the same thing to show an avatar with the user's initials by using the awesome DiceBear API. I made a short video about this already, but DiceBear will basically make a unique avatar based on the username as the random seed. Then after that, we have a button that fires the sign out function when clicked. And finally, we'll add an else block here to show something else if the user is not logged in. That takes care of the header component, and you'll notice that I'm declaring it here in the app component. And now we can move on to the login component that will allow the user to sign in or sign up with their username and password. In the component, we'll import the user object, then set up local state for the username and password. In Svelte, we can implement two-way data binding with a variable by creating a form input and then saying bind value to that variable. That means anytime the user types into the form, the value of the variable will change.
We have separate form inputs for username and password, and we'll share them for both the login and sign up process, which itself just consists of two different buttons that will either call the login function or the sign up function. To log a user in, we use the user auth method. It takes the username and password as arguments, then the third argument allows you to define a callback. In this case, the value of the store that we set up earlier will update automatically, but we can do other things here as well, like error handling. Now, the process to sign up a new user is very similar, but instead of calling auth, we call the create method on the user. And if the user creation is successful for a chat app like this, and there's a whole doc on it if you want to learn the username they choose when they sign up. Now, thing about Svelte is that we can easily do that with a variable by creating a form input and then saying bind value to that variable. That means anytime the user types into the form, the value of the variable will change. We have separate form inputs for username and password, and we'll share them for both the login and sign up process, which itself just consists of two different buttons that will either call the login function or the sign up function. To log a user in, we use the user auth method. It takes the username and password as arguments, then the third argument allows you to define a callback. In this case, the value of the store that we set up earlier will update automatically, but we can do other things here as well, like error handling. Now, the process to sign up a new user is very similar, but instead of calling auth, we call the create method on the user. And if the user creation is successful, then we will log that user in automatically. Now, at this point, we have a working user authentication system. But one thing to keep in mind here is that we're not enforcing the uniqueness of the username, which is just a caveat you'll want to keep in mind. I should mention that it is possible to enforce username uniqueness, but it's beyond the scope of this video. Now we can move on to the chat component, which is where we will query items from the database and also give the user the ability to send a message. The component has two pieces of state, a string for a new message that the user will type into a form input, and an array of messages which will contain the message text along with the user who sent it and a timestamp. To query messages, I'm going to set up the onMount lifecycle hook that will run whenever the component is first initialized. Inside of it, we'll use the database to make a reference to the chat node. In this demo, since we have one giant super chat, we can just give it a name of chat. But if you have multiple chat rooms, you'd likely want to give each one a different name. After that, we'll call map to basically loop over every single message in the chat, and then call once to only read each message once. In this case, each message is immutable, so we don't need to listen to changes in real time, but you could do that if you wanted to using the on method. We can then define a callback that will be called on each new message that will give us access to the data and the ID of that node. Now, if the data is defined, we're going to format a message that's more suitable for the UI with the properties of who, what, and when. Who is the user that sent the message, and we can figure out who sent it by taking the data of the raw message and using it to get the alias. Next, we have what, which is the actual text of the user's message. But the interesting thing here is that we're actually implementing end-to-end encryption. That means the value in the database is encrypted, and the only way to decrypt it is to have the corresponding key. In this demo, our data is encrypted, but it's not really secure because I'm just hard coding the encryption key right here in the source code, so anybody could find it. But if it was an actual secret between two users, you could use it to encrypt and decrypt messages. And finally, we have the when property. To get an accurate timestamp across all of our users, we're using gun state as the final source of truth with the raw data. That'll give us all the data we need for the UI. Then the final step is to take each message and add it to an array that we can then loop over in the UI with Svelte. You can loop over an array of items in Svelte with each. This will render the chat message component for each message in the array. And also notice how I'm adding parentheses with message when, which provides Svelte with a unique key to sort all of the messages efficiently. That gives us a way to read messages in the chat. Now we just need a form to submit them. In the UI, you'll notice that I have a form that on the submit event will call the send message function. Inside the function, the first thing we'll want to do is use C to encrypt the actual message text, and notice how the key is the same as the one we used earlier to decrypt the messages. From there, we can associate the message to the current user using the encrypted message as the value. Then we'll create a date to serve as the index for the message so it can be sorted properly, at which point we can reference the chat collection, create a new node based on that index, and store the message value. Congratulations, you just built a decentralized chat app. It'll be interesting to see if this
thing actually works when the video is released. Let me know how things go for you in the comments. Make sure to like and subscribe. Thanks for watching, and I will see you in the next one. Hey everybody, this is Gregory from DAP University, and today I wanted to show you how you can get started building your first decentralized application in 20 minutes. So the goal here is to give you the tools that you need to get started building a decentralized application, or DApp, quickly. So what I'll do is give you all of the individual components that you need to get started, and we'll go from there. So you might have seen my other tutorial where I show you how to build a full decentralized application step by step with a framework like Truffle. So in this tutorial, I'm not going to use a framework, and there are a few reasons for that. Reason number one is that whenever you use a framework, sometimes there are a lot of things that you take for granted that are just happening with your framework that you get for free, and you don't necessarily understand, how this works. So today we're going to strip away the framework, and you'll be able to see how each of the pieces in your DApp kind of works on its own. Now, the other goal of not using a framework is to get you started faster. When you use a framework, you have to download a lot of stuff and do a lot of things via the command line, and sometimes that gets people a little hung up. So if you want to remove that barrier to entry, we'll do that with today's tutorial as well. So, like I said, if you haven't seen my tutorial where I take you through, step by step in building your first decentralized application, be sure to check that out, because at the end of this video, I'm going to show you why you really do want to use a framework for building dApps. It makes things a lot nicer in the long run, but this will give you something to get started. And be sure to subscribe to the channel if you'd like to see more videos on how to build your first decentralized application on the Ethereum network. All right, what are the basic things that we need in order to build our dApp quickly? Well, from a code perspective, we need a smart contract, and we need a client-side application that will talk to the smart contract on the blockchain. So for the smart contract, we will develop this in Remix, which is a browser-based IDE that allows us to write our smart contract and compile it and run it. We also need a blockchain to deploy our smart contract to, and for local development purposes, we will use Ganache, put out by the creators of Truffle, the framework that I use in my other tutorial. And Ganache is basically, an in-memory blockchain. It's like a one-click blockchain. So this is the only thing that you'll need to download locally. You can download this and install it. And once you open it, it's pretty straightforward, pretty simple. It'll just start running, and you'll have 10 accounts connected to your blockchain for free. Now, the next thing that we need, there are two other things. We need a library that allows our client-side application to talk to our smart contract on the blockchain. And that's what Web3.js is. This is the Web3 library, which is what we'll use to connect our smart contract to our front-end application. The last thing we need is a browser extension that converts our modern web browser into a blockchain browser, because most web browsers don't support this out of the box for free. We'll use MetaMask, which is a Chrome extension that will allow your browser to talk to the blockchain. It's pretty simple to install. You just add it to your Chrome extensions and set it up. If you need help setting this up, I walk you through setting up MetaMask and a couple of these other libraries step by step in my other tutorial, where I walk you through building your first decentralized application. And I can post a link to that down in the description below. So let's go ahead and dive in. First, let's look at our smart contract code and also kind of the client-side application that we'll be developing. This is pretty simple. I'm going to post a link to this in the description below. This will be deployed to GitHub. So essentially what we'll do is we'll have a really basic index.html file that will have our application layout, and I'll write some JavaScript down here, and we will use this smart contract that I've written. It's just a really basic contract, and we'll just kind of copy and paste this into Remix in order to compile it and deploy it. Now you'll see some other stuff in here like CSS, fonts, and JavaScripts, and this is really all just external libraries that I've imported so that we can get up and running quickly. And specifically, it's just the Bootstrap library so that we can have some nice looking UI. And the other main component is the actual Web3 library that I mentioned a second ago. And this is the library that we'll kind of look at in depth or in detail when we develop this little front-end application here. So let's take this smart contract. We'll copy it.
And this is kind of the beginnings of the smart contract that I build out in my other tutorial where we build a full voting decentralized application. Go ahead and paste in your smart contract code. So let's take a look at this for just 1 second. This smart contract's pretty basic. All it really does is display a candidate name. We'll just read the candidate name here. This is going to be our only candidate in this election. And it also allows us to just update this candidate name. And in the other tutorial, I kind of walk you through how to, we can add candidates and we can vote for candidates and we'll tally up votes. But for now, we're just going to do something very simple to know that our, client-side application is actually talking to our smart contract. And, you could go from there. So what we need to do, first of all, is ensure that Ganache is running. See this here? Yeah, just download and install Ganache and launch that, and you'll see that you have 10 accounts here with a balance of 100 Ether. And you'll need to take note of the port that Ganache is running on. Mine's running on 7545 by default. So we'll go back to Remix. Okay, if the mic is on, this is the first step that I'm taking towards blockchain development. First software that I'm installing that would facilitate me developing a blockchain application. One small step for Suvro will probably result into me becoming a millionaire. I wanna be a millionaire so fucking bad. Buy all the things I never had. Mix, and we will change the environment. Now, by default, over here in the Run tab, yours is probably set to JavaScript Virtual Machine, or maybe Injected Web 3. I'm going to choose a Web 3 provider. And it'll ask us if we want to connect to an Ethereum node, and essentially that's what Ganache is going to give us, is a local node or an RPC instance. And so I'm going to update this to 7545 because that's what we saw Ganache running on. Click OK. And once that's connected, you should see the accounts available in Ganache. So I'm going to select this first account right here with this one right here, the 100 Ether. And I am going to deploy the smart contract. And along with that, I will be question install. What exactly am I doing? I would have limited understanding when I am doing it, but while I am doing it, I will ask questions and then probably get more insights. By clicking create. But for now, I'll end this time over here. Ganache is installed. See you on 15.